Game show, my public. Saras, ya bahu saras. This is Raashii by side to make your accounting concepts clear. And today we are going to be learning about journal and ledger. I just want you all to know brief about them so that if you proceed further in your studies, you will be having a basic idea about their understandings. So let's begin. Okay, so let's first start with journal. What is journal? Journal is basically prime book of entry, whereas ledger is principal book of account. Wait a sec. Journal is book of original entry, whereas ledger is book of final entry. A journal is gateway to book of accounts, whereas also known as primary book, whereas a ledger is principal book. A primary book, principal book, 1 minute. Sorry, here it is known as primary book and so here it is known as secondary book. Yeah. Then order of preparation. हम सबसे पहले prepare करते हैं journal. Journal is prepared first. Ledger is prepared after general. The journal has records in chronological order, मतलब date wise, it in the sequence of the transactions that have happened. मतलब पहला अगर समझो purchase का transaction हुआ 1 तारीख को, 2nd तारीख को हुआ sale का transaction, 3rd तारीख को हुआ expense का transaction. So 1, 2, 3, basically chronological order. In sequence of events, or in the sequence of transactions that occurred in a date wise manner, basically date wise. Whereas ledger is prepared on basis of accounts wise. मतलब सबसे पहले अगर एक समझो आशी अकाउंट है और राशि अकाउंट है, तो फर्स्ट आशी अकाउंट प्रिपेयर होगा एज इट हैज नेम ए एंड देन राशि अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो सबसे पहले हम आशी अकाउंट है तो ए है और ये आर है, तो पहले आशी अकाउंट प्रिपेयर होगा एंड देन राशि अकाउंट प्रिपेयर होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट वाइज इट इज प्रिपेयर्ड. ठीक है. उसके बाद 6, नरेशन इज रिटन इन लेजर, सॉरी इन जनरल. नरेशन इज रिटन इन जनरल, whereas narration is absent. नहीं होता है लेजर में. कहाँ नरेशन होता है? 7, journal has ledger folio in it as a column, whereas ledger has journal folio in it as a column. फोलियो मतलब पेज नंबर, मतलब जो जर्नल का हमने एंट्री मारा है अकाउंट्स के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल राशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जो राशि अकाउंट है लेजर में कौन से पेज नंबर पे है वो हमें जर्नल एज अ रेफरेंस देता है. और जर्नल फोलियो इज प्रेजेंट इज वन ऑफ द कॉलम ऑफ लेजर, जो हमें बताएगा ये अकाउंट जर्नल में किधर. लेजर में हमें जर्नल का रेफरेंस देंगे, जर्नल में हमें लेजर का रेफरेंस देंगे. 8, अ जर्नल हैज डेबिट और क्रेडिट कॉलम, whereas a ledger has, 1 second, my placements of line are not clear, whereas a ledger has debit or credit side of account. Okay, then comes 9th, on the basis of journal final accounts. Journal cannot be the basis of final accounts. Journal cannot be the basis of final accounts, whereas ledger is the basis of creation of final account. ledger की वजह से हमें बैलेंसेस के बारे में पता चलता है, जिसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस से हमें पूरा हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में पता चलता है, एंड दैट leads to us for preparation of a final accounts, which is P&L or trading or balance sheet. Okay, so journal cannot be the basis of final accounts, whereas ledger is the basis of final accounts for the creation of final accounts. Basis for the creation final accounts of creation of final accounts. 10 point, journal do not have any balance, whereas ledgers are prepared for obtaining balance. हम लेजर इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें बैलेंस के बारे में पता करना होता है कि किसका क्या बैलेंस है आफ्टर ऑल दोस ट्रांजैक्शन. सेकेंड, आफ्टर जर्नल वी प्रिपेयर लेजर, एंड आफ्टर लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. फिर journal do not show accuracy, whereas ledgers show accuracy, as when debit is equals to credit means no balance left, and so we can find the accuracy, which is indication of accuracy. Now last and the end point is writing or recording
entries in journal is known as journalizing, sorry. Whereas classifying entries from journal to ledger is known as, अगर journal पहले journal prepare होता है, right? After journal preparation, see मैंने पहले ही बोला है, journal is prepared first, prepared after journal, ledger is prepared after journal. So classifying entries from journal to ledger is known as posting. Okay, here a distinction gets ends. Okay, so I'm just highlighting every point and then it's over. So you chillax and just see. First of all, journal is a prime book of entry. Ledger is a principal book of entry. Journal is a book of original entry. Wait a second. Why is it not? Journal is a prime book of entry. Ledger is a principal book of entry. Journal is a book of original entry. Ledger is a book of final entry. क्योंकि ledger के बाद कोई entry होता ही नहीं है, उस डायरेक्ट समराइज होता है ट्रायल बैलेंस में, फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, कोई एंट्रीज नहीं होती है. Ledger is book of final entry. Journal is gateway to accounts. Ledger is a secondary book. Gateway to accounts मतलब journal एक primary book होगा, ledger उसके बाद प्रिपेयर होता है, so वो secondary book है. इसलिए हम बोलते हैं journal is prepared first, ledger is prepared after journal. जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, whereas लेजर में ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. नरेशन इज रिटन इन जर्नल, लेजर में नरेशन इज एब्सेंट. देन जर्नल में लेजर फोलियो का रेफरेंस देते हैं, लेजर में जर्नल फोलियो का रेफरेंस देते हैं. फिर डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स होते हैं जर्नल में, पर लेजर में डेबिट और क्रेडिट साइड होता है. डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. जर्नल जो होता है इट इज द बेस, कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनल अकाउंट, whereas लेजर इज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनल अकाउंट. Now journal do not have any balances, whereas ledger is prepared in order to obtain the balances. Now after journal we prepare ledger, after ledger we prepare trial balance. Trial balance I've written spelling wrong, just wait a second, I'll correct it. Now journal do not show accuracy, whereas ledger shows is the accuracy. And last, recording entries in journal is known as journalizing, whereas classifying the entries from journal to ledger is known as posting. I hope all these distinctions were way more clear for you to understand what is journal and what is the ledger. And I think this is the most precise and conceptual understanding that you can get ever in most simpler terms. In case of any doubts, any thing that you didn't understood anyways, you are always welcome in my comment sections. I'll surely reply you as and when I get connected to you. So yeah, this is for today and bye bye. Have a nice day.